Welcome back, guys. Now we're going to be doing O Level Physics 5054 May June 2022 paper 1 2. Before starting, I'll tell you some rules about this paper. This paper will have 1 hour, and in that 1 hour, एक घंटे में हमने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं and each question will be 1 mark. So approximately you will be given 1 minute and 30 seconds for each question, approximately on average. समझ आ गई? ठीक है तो having that said, I have one more thing to tell you before starting the paper. So हमारे topical past papers out. If you want to buy the topical past papers or the yearly past papers from us, you can just go on our Insta, which is Inkscribe, and you'll find them there. You can buy it from there. समझ आ गई? Inkscribe से आप खरीद सकते हो. एंड हमारे पास पेपर्स की ये खासियत है कि हमारे जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट एक टॉपिक है एंड इट हैज 10 क्वेश्चंस in P2, right? Every question will have its own explained video, right? Every question will have its own explained video. So yeah, that is our plus point for the past papers, for our topical past papers. Yearly को तो हम निकाल ही रहे हैं. So having that said, let's move on. Question number 1. A force of 3 newtons and a force of 4 newtons act on an object. What is the maximum possible resultant of these two forces? So basically, wait, just a second. एक second. So मैं ये दो बना देता हूँ, राइट? एक ये बना दिया है हमने, एक यहाँ बना दिया, एक ये बना दिया, एक just wait, this will all make sense in a minute. So this is 3 newtons and right below it is 4 newtons. And this is 3 newtons and this is again 4 newtons. इनमें से कौन सी कन्फिगरेशन में जो फोर्सेस है दे ऐड अप, किस कन्फिगरेशन में फोर्सेस ऐड अप होंगी? इट विल बी इन दिस कन्फिगरेशन. जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही होंगी दे विल ऐड अप, बट व्हेन देर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस दे विल सब्ट्रैक्ट. मतलब यहाँ लेफ्ट पे 4 न्यूटन्स लग रही है, यहाँ राइट पे 3 न्यूटन्स लग रही है, तो हम बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाला फोर्स माइनस कर देंगे एंड दिस विल बी आवर रिजल्टेंट विच इज 1. 1 will be our resultant force in the left direction. But since हमने दोनों forces को एक direction में लगाया हुआ है, what will happen then is that the forces will add up. So 3 plus 4 will be 7 newtons. 7 newtons इस direction में लग रही है and that will be the maximum possible resultant of these two forces. आगे चलते हैं जी हम. A length of copper wire is labeled 0.5 meters and 0.5 millimeters as a diameter. Which instruments are most suitable to measure accurately the length of the diameter of the wire? अच्छा जी, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर वायर. इस वायर का जो लेंथ होगा दैट विल बी 0.5 मीटर्स. 0.5 मीटर्स. और जो डायमीटर होगा दैट विल बी 0.5 मिलीमीटर्स. सो वेरी स्मॉल डायमीटर एंड अ फेयरली लार्ज लेंथ. तो लेंथ के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? वी विल यूज अ मीटर रूल. We will not use a caliper, that is way off. And for the diameter के लिए हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जो बहुत छोटी चीजों को मेजर कर सकता है accurately. And that will be our micrometer screw gauge. So B will be our answer. Diameter के लिए हम मीटर रूल तो बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे. So yeah, question number 3. The graph shows a speed time graph for a parachutist who jumps from a plane but does not open his parachute immediately. At which point does he open his parachute? पैराशूट तब ओपन होगा जिस पॉइंट के बाद डिसेलरेशन हो रही है, मतलब बी के बाद डिसेलरेशन हो रही है, मतलब बी पे पैराशूट खुला है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैराशूटिस्ट एंड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है विच इज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस. और एयर रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? एयर रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन योर सरफेस एरिया, राइट?
जब पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट खोलेगा दैट विल बी ऑफ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी विच विल कॉज द पैराशूटिस्ट टू स्लो डाउन स्लैश डिसेलरेट। आपने कभी मोटरवे पे अपना हाथ तो बाहर गाड़ी से निकाला ही होगा, अपने हाथ को अगर आप पूरा पाम निकालते हो हाथ का दैट विल बी पुशिंग लाइक बैकवर्ड्स, आपका हाथ पीछे पुश हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। बट इफ यू मेक अ फिस्ट, आपका हाथ ज्यादा एरोडायनेमिक होता है और इट स्लाइसेस थ्रू द एयर। तो या यहाँ 0 से A तक द पैराशूटिस्ट इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम A to B। द parachutist is at a terminal velocity from B to D। द parachutist is decelerating और D से आगे वो फिर से एक टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच कर गया। लेकिन हमने प्रिंसिपल पे स्टिक करना है और मैंने आपको क्या बताया है, जिस पॉइंट के बाद डिसेलरेशन टेक प्लेस करेगी उस पॉइंट पे पैराशूट खुलेगा। तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। अ 60 किलोग्राम पैसेंजर एंटर्स अ स्टेशनरी लिफ्ट। तो ये हमने पैसेंजर बना दिया है, इट इज एंटरिंग अ स्टेशनरी लिफ्ट। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम। हाउ मच फोर्स डज द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट exert on the passenger? Force of the floor of the lift on the passenger when the lift accelerates upwards at 2 meters per second square। तो यहां हम F इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे बिकॉज यहां अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। यहां हम इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी लगा देंगे बिकॉज द वेट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू एम जी, एम हमारे पास है 60 इज इक्वल टू इंटू 10 gravitational field strength 600 newtons will be our answer for weight which is acting downwards। F is equals to ma लगा देते हैं। F is equals to ma will be equal to force is equals to mass which is 60 into a which is 2। This will give us F is equals to 120 newtons। तो हम फोर्स लगा देते हैं, फिर से F is equals to ma लगा देते हैं। F net is equals to ma upward minus weight is equals to ma which is 120 like we calculated। तो ये हमारे पास आ जाएगा 600, यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो 120 प्लस 600 इज 720 न्यूटन्स एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन। The diagram represents the moon and its orbit around the earth. Which arrow represents the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown? So whenever an object is moving in a circular path like the moon is around the earth, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। दैट इज व्हाई दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो ना जिसमें डायरेक्शंस दी हो और उसने रिजल्टेंट फोर्स मांगा हो, यू इंस्टेंटली गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है ना। दिस विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन, टू द path। Very easy. Question number 6. A measuring cylinder containing water is placed on a balance. A stone is placed into the water. The diagram shows the reading on the balance and on the measuring cylinder. तो हमारे पास पहले एक खाली measuring cylinder पड़ा हुआ है जिसके अंदर पानी है सिर्फ, and the weight is 55 grams और जो हमारे पास volume है that is 20 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद हमने एक स्टोन ऐड कर दी जिससे मास ऑफ कोर्स ज्यादा होगा और वॉल्यूम भी ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम 35 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन? डेंसिटी हमने पता करनी है। डेंसिटी को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हमने निकालनी है मास एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में एक सिमिलर सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं, राइट। मास हम निकालेंगे, पहले हमारे पास 55 था, बाद में हमारे पास 92.5 हो गया। 92.5 माइनस 55 विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू weights, I mean two masses। 55 that will give us the answer which is I think 37.5। 37.5 grams will be our answer। और वॉल्यूम निकालना है अब हमने। वॉल्यूम के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, पहले वॉल्यूम था 20 अब हो गया 35, तो 35 माइनस 20 विल बी आवर आंसर विच इज 15 centimeter cube as the answer।
तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू mass divided by volume 37.5 divided by 15 will give us the answer 2.5. 2.5 centimeter, I mean grams per centimeter cube. That will be our answer. C. आगे, the diagram shows a uniform solid rectangular block of weight 50 newtons that is pivoted about point P. The height of the block is 40 centimeters. The base of the block is 8 centimeters. Which horizontal force F just makes the block start to rotate about point P? Point P is the pivot. So clockwise moment is equals to anti-clockwise moment. तो क्लॉकवाइज हमारे पास हो जाएगा F into its perpendicular distance. Perpendicular distance होगा इसके F के 40 होगा till the pivot. तो 40 is equals to anti-clockwise, which is उसका जो फोर्स है that is gonna be 50 into perpendicular distance. इस फोर्स के perpendicular distance होगा this. ठीक है ना, this होगा which is only half of the 8 centimeters, which is gonna be 4. तो is equals to 50 into 4 divided by 40. This will be, I think, 5. 5 will be our answer. The center of mass of a solid rectangular block is at its center. A small heavy weight is available. In which arrangement is the center of mass the lowest? First of all, I'm gonna draw cross section. एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूं मैं शुरू शुरू में. क्रॉस सेक्शन जब बनाएंगे उसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा, बिकॉज दिस इज अ रेगुलर ब्लॉक. कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा ना, लाइक अ क्यूब और अ रेक्टेंगल, क्यूबॉइड कह लो, उसके हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा द सेंटर ऑफ मास. तो इधर है ज्योमेट्रिकल सेंटर. अच्छा, सेंटर ऑफ मास के लिए हमें दो चीजें देखनी है. वेट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लो. वेट डिस्ट्रीब्यूशन जब लो होगी, जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी लोअर. ठीक है ना. अगर नीचे की तरफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगी तो सेंटर ऑफ मास नीचे होगा. अगर ऊपर की तरफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन हायर होगी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा. तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लो. मोस्ट ऑफ द वेट शुड बी, मोस्ट ऑफ द mass should be low. ठीक है ना. So that is point number one. Second point will be the area, the surface area. The block or the object. The object should cover the most amount of surface area is in. Cover the most amount of surface area. अच्छा, अब हम इन दोनों चीजों को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहाँ देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लो कहां पे होगी? जब आप इसको फेस वाई पे रखोगे तब सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ये कवर करेगा, राइट? ये फेस वाई है. फेस एक्स विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. फेस एक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस. फेस वाई विल लुक समथिंग लाइक दिस. अगर आप फेस वाई पे रखोगे इट विल कवर द मोस्ट अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया. तो फेस वाई, फेस वाई. अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इसके साथ एक एडिशनल वेट भी है. आपको क्या लगता है अगर आप वेट ऐड करोगे व्हाट विल हैपन? जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप वेट ऐड करोगे मास डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जाएगी ना कि नीचे आएगी. तो दैट विल मेक द ऑब्जेक्ट मोर अनस्टेबल. तो हमने वेट ऐड नहीं करना. सो बी विल बी आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड. विच point is the limit of proportionality? The limit of proportionality is just the point before the force and the extension graph is not no longer proportional. ठीक है ना. When it's no longer proportional, the limit of proportionality has been reached, and this seems like the point C. अगर आपने अपने बचपन में लाइक पेन के अंदर से स्प्रिंग निकाली और आप स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच कर दो कि इट डजंट लाइक गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप,
तो वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रीच कर चुकी है, रीच कर चुकी है, उसको पास कर चुकी होती है. सो दैट विल बी आर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो सी विल बी आर आंसर. यहां से यहां तक तो सीधा स्ट्रेट लाइन थी ना, उसके बाद कर्व होना शुरू हुआ है. तो दैट मीन्स के आपके लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई है एट द पॉइंट सी. अच्छा जी, एन इलास्टिक स्प्रिंग हैज अ अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर. मतलब अगर उसको आप स्ट्रेच ना करो तो उसकी जो लेंथ बनती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 30 सेंटीमीटर. तो ये हम बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओरिजिनल लेंथ. A load of 6 newtons is hung from the spring and the length is now 66 centimeters. तो उसके ऊपर एक लोड डाला गया और उसकी जो लेंथ है दैट इज नाउ मोर देन डबल्ड. ठीक है ना. 6 न्यूटन के उसके ऊपर लोड डाला गया. समझ आ गई. द लोड इज रिमूव्ड एंड द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. A load of 2 newtons is hung from the spring. What is the new length of the spring? First of all, a very easy question. एक सेकंड इसको हटा दे. तो इसकी एक्सटेंशन कितनी है? हमने एक्सटेंशन निकालनी है. Basically, we're calculating the extension. I think the answer is 42 as it seems. First of all, the extension will be 66 minus 30, which will give us the change in length, which is the extension, 36 centimeters. So, 36 centimeters divided by 6 is equals to x divided by 2. ठीक है ना. So 36 divided by 6 will be 6 and 6 multiplied by 2 will be 12. 12 is equals to x. So the extension of the second load will be 12 centimeters. Now we have to add this to the original length, which is 30 centimeters. So 12 plus 30 will be, 12 plus 30 will give us 42 centimeters. And that is our answer. And that is the first 10 questions. Question number 11. A barometer is an instrument used to measure atmospheric pressure. In one type of barometer, the height of a liquid is in a tube is measured. In which diagram does the height h represent the atmospheric pressure? So we just have to identify what the barometer is, right? So this is a manometer. This is not an accurate representation of a barometer. This can be a barometer, but इसकी जगह वैक्यूम होनी चाहिए. So this is not the answer either. इधर वैक्यूम होना चाहिए rather than air. And this is the right answer because it has a vacuum and it is the right answer. Question 12. Although the manometer is out of our syllabus, I'm still gonna attempt this. If you wanna skip this, you can. But if you don't, you can watch this because आपकी ये knowledge में इजाफा ही करेगी. It will not take away from your knowledge. So yeah, a manometer contains mercury of density 14,000 kilograms per meter cube. The manometer is connected to a gas supply and the difference in the height of the mercury level is 72 millimeters. ठीक है ना. The atmospheric pressure is 100 kilopascals. So the gravitational field strength is of course 10 newtons per kilogram. What is the pressure of the gas supply? First of all, what is happening here is कि जो gas है ना, it has a pressure of its own and it is pushing the liquid which is mercury downwards, and the atmospheric pressure is also pushing the mercury downwards, but the pressure of the gas is much larger than the pressure of the atmosphere. That is why all the liquid is pushed up here and it creates a difference of 72 millimeters. ठीक है ना. 72 millimeters का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है. अब इसको हम फॉर्मूला में कैसे पुट करें? हम फॉर्मूला में ऐसे अप्लाई करेंगे इसको. हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है पहले आप ये सोचें. फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? इसमें फॉर्मूला यूज होगा रो जी एच का. ठीक है ना. डेंसिटी इज इक्वल्स टू, आई मीन प्रेशर, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो विच इज डेंसिटी, जी विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू, एक सेकेंड, इनटू रो जी height difference to be exact. And we're gonna add all this up
with the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. So yeah, that is gonna be our pressure, the total pressure. So yeah, let's calculate. So pressure is equals to density, which is 14,000 kilograms per meter cube, multiplied by gravitational field strength, which is 10, multiplied by the height, which is 72 millimeters. Millimeters को हमने meters में convert करना है. What will we do? 72 divided by 1000. You can also do 100. 72 divided by 100 divided by 10. So yeah, that will give us the same answer. The 0.072 is the answer. Anyways, आगे चलते हैं. And we add that all up with 100,000, which is the atmospheric pressure given. So what will we get? इसको नीचे लिख लेते हैं. And we'll get an answer of 10,000 approximately. And we're going to add that 10,000 to the 100,000, which was the original atmospheric pressure. And we're going to get an answer of 110,000 pascals. Or we can say 110 kilopascals. आगे question number 13. Which device provides a continuous steady energy output for the longest time? So pay attention to that. First of all, we're gonna eliminate any sources of energy which are reliant on something, right? For example, solar panels. Solar panels are reliant on sunlight. अगर sunlight आना बंद हो जाएगी, the energy will be cut off. B, विंड जनरेटर. विंड आना बंद हो जाएगी तो विंड जनरेटर भी बंद हो जाएगा. सो बी एंड डी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है ना? अच्छा, द आंसर लाइज बिटवीन ए एंड सी. दीज आर द टू व्हाट यू कॉल इट एलिजिबल आंसर्स. इनमें से कोई भी हो सकता है. बट इन माय ओपिनियन अ न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ना, दैट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस स्टेडी एनर्जी आउटपुट फॉर द लॉन्गर टाइम देन अ 1.5 वोल्ट सेल, राइट? एक न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड इट विल बी स्टेडी इफ वी कंपेयर इट टू अ 1.5 सेल, 1 वोल्ट सेल. तो या आगे चलते हैं. इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. A load is pulled by a rope attached to a motor. The resultant force exerted by the rope on the load is shown in the diagram. Each diagram, the load moves in the direction of the force shown and takes 10 seconds to travel 1 meter. In which diagram does the motor does द ग्रेटेस्ट पावर? अच्छा ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर वहां होगी जहां ग्रेटेस्ट वर्क डन होगी, और ग्रेटेस्ट वर्क डन वहां होगी जहां ग्रेटेस्ट फोर्स लगेगा. सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू लुक एट इट द राइट वे. तो इज द राइट आंसर. आई कैन स्टिल डू द कैलकुलेशंस इफ यू वांट मी टू. एक ही कर लेते हैं, राइट? तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी और वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. और हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर हम फोर्स करेंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 1 मीटर, we'll get the same answers but in joules, right? And if we divide those joules by the time taken, 10, each of them will be divided by 10, so the highest answer will still be 12. So that is our answer. Let's move on to question number 15. The electrical energy supplied to a kettle is 600 kilojoules. Of this energy, 45 kilojoules is transferred to the surroundings and 15 kilojoules is used to heat the casing of the kettle. The remaining energy is used to heat the water. What is the efficiency of the kettle? 0.9. So that is the answer. Now I'll do the calculations for you guys. तो अब हमने निकालना है the efficiency of the kettle. The efficiency of the kettle will be calculated using the useful divided by total. Useful power divided by total power. ठीक है ना? That will be our answer. यूजफुल पावर हमारे पास कितनी हुई है? 600. हमारे पास टोटल पावर थी 600 किलो जूल्स. और ऑफ दिस
एनर्जी 445 किलो जूल इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, तो हम इसमें से 45 माइनस कर देंगे एंड 15 किलो जूल इज यूज टू हीट द केसिंग ऑफ द केटल, और इसमें से हम 15 और माइनस कर देंगे मजीद विच इज यूज टू कीप द केसिंग ऑफ द केटल हॉट, so that will give us 540. 540 was the useful one and the total was 600, and if we get the answer that is going to be 0.9, so that is going to be our answer. Question number 16. How is heat energy transferred through the vacuum of space from the sun to the moon surface? That is going to be not conduction. Conduction is between solids. Not convection, it is between fluids. And radiation only. That is going to be only radiation, right? So very easy answer. Question number 17. A metal cube contains boiling water. Each vertical surface of the cube is painted a different color or has a different texture. Identical thermometers are held at equal distances from each vertical face, near which does the thermometer read the greatest temperature. उन्होंने बताया गया हमें कि each surface area is a different texture and a different color. Different color है, different texture है. Between which of the colors emits the greatest amount of heat? क्योंकि emission से ही thermometer पे एक reading आएगी. जब the surface emits what do you call it heat, जो थर्मोमीटर होगी उस पर एक रीडिंग आएगी, राइट। अब हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा सरफेस सबसे ज्यादा हीट एमिट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोना बी ऑफ कोर्स ब्लैक, इट इज नॉट गोना बी व्हाइट, तो इट्स आइदर ए और सी बिकॉज व्हाइट सरफेसेस आर नॉट गुड एमिटर्स। और अब हमने डिसाइड करना है बिटवीन शाइनी एंड डल, so these are the differences in texture. Shiny will be straight and the dull texture will have bit of crevices, मतलब ऐसी होगी dull texture। तो आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा surface area है? Which of them will be able to emit more? The surface which will be able to emit more will be the surface which has the larger surface area, which is the dull one. Dull one will have a larger surface area, therefore it will emit more. So dull black will emit more heat, which will have a greater like reading on the thermometer. अच्छा आगे चलते 18. A liquid column in a liquid in glass thermometer is 2 centimeters long at 0 degrees Celsius. The column expands by 10 centimeters when heated to 100 degrees Celsius. Measuring from P, how long is the liquid at 30 degrees Celsius? So we're going to apply the formula that is written here. So T is equals to L theta. L हम ऐसे ही लिख देते हैं माइनस एल नॉट। एल नॉट क्या हमारे पास होगा? एल नॉट इज द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 2 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय L100. L100 is the length at which the temperature is 100 degrees Celsius, which is 2 plus 10, which is 12, minus L naught, which is 2 again. और टेम्परेचर की जगह हम 30 लिख देते हैं, and this whole will be multiplied by 100. First of all, what we're going to do is that जो 30 है यहाँ वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू L माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास अभी सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 30 डिवाइडेड बाय 100 multiplied by 10 plus 2, it is going to be 5. 5 is going to be the answer, 5 centimeters. This is a repeated question, पिछले पेपर में भी यही आया था। Question 19. A liquid in glass thermometer consists of a bulb containing a liquid which expands into a thin capillary tube. The liquid in the thermometer is replaced by the same volume of a different liquid that expands more for the same temperature rise. The length of the capillary tube remains the same. How does the new thermometer compare with the new old thermometer? So first of all, what is happening is that, for example, this is a tube. Basically, this is a tube और इसमें एक ऐसा liquid डाला है
राइट? जो एक्सपैंड ज्यादा करता है if it experiences a temperature rise, it will expand more, right? So what will happen is that when even a small like temperature rise happens or a temperature drop happens, it will be more sensitive to the temperature, right? The liquid will be more sensitive to the temperature because it expands more, right? So it has greater sensitivity. And when a thermometer has a greater sensitivity, मतलब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है बट द कैपिलरी ट्यूब रिमेन्स द सेम द रेंज विल गेट स्मॉलर सो या मैं आपको पिछले में भी दिखा देता हूँ ये अपना हम कर लेते हैं कॉपी इसको इधर लिखते हैं इसको दो हटाओ यार तो ये देखो क्या लिखा था मैंने इफ द कैपिलरी ट्यूब रिमेन्स द सेम and the new liquid is more expansive the sensitivity will rise but the range will fall expanding at x rate पहले वाला जो x rate पे expand कर रहा था and volume will equal अच्छा इसको तो बिल्कुल छोड़ ही दो so yeah that is going to be our answer which is B steam at 110 degree Celsius condenses on a surface to form water droplets at 100 degree Celsius ठीक है ना आगे पढ़ लेते हैं what will happen to the steam after it comes into contact with the surface अच्छा भला क्या होगा जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल स्लो डाउन एंड emit energy to the surroundings right b is the right answer I'm just gonna explain you जो जैसे जैसे जो स्टीम होती है ना इट कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ऑफ द स्टीम दे लूज काइनेटिक एनर्जी एज दे स्लो डाउन एंड दे टर्न फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड एंड व्हेन दे टर्न फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड ये जो पार्टिकल्स होंगे दे विल रिलीज एनर्जी and this is more commonly known as the latent heat of condensation. So yeah, B is the right answer. Next 10 questions करेंगे अब हम इसको उठा 21. Which list shows the states of matter in order of expansion from smallest to greatest for the same temperature rise? For the same temperature rise, वो हमसे पूछ रहे हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा कौन एक्सपैंड करेगा, सबसे कम एक्सपैंड कौन करेगा? सबसे कम एक्सपैंड तो हमें पता है कि कौन करेगा, दैट इज गोना बी सॉलिड्स. सॉलिड्स विल एक्सपैंड द लीस्ट. उसके बाद आता है लिक्विड. लिक्विड सॉलिड से ज्यादा एक्सपैंड करेगा बट जो गैस होती है दैट टेक्स द फर्स्ट स्पॉट और गैस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करेगा. सो या डी मेक्स इट मेक्स डी द आंसर क्योंकि उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तो स्मॉलेस्ट चेंज आता है सॉलिड्स में उसके बाद लिक्विड उसके बाद ग्रेटेस्ट चेंज आता है गैस में. 22 which row describes the boiling and evaporation of liquid? बॉइलिंग बॉइलिंग में अगर आपने अपनी मतलब घर में कभी चाय बनाई हो माँ बाप किसी के लिए भी चाय बनाई हो अपने लिए बनाई हो तो आपने पानी का सॉस पैन में पानी रखा होगा चूल्हे पे और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं एट दैट पॉइंट योर अम्मी टेल्स यू टू ऐड पत्ती है ना तो बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं थ्रू आउट द लिक्विड सो इट्स आइदर ए और बी. Evaporation, on the other hand, evaporation does not occur at only one temperature and it does produce cooling. And how does it produce cooling? You might ask कि for example ये आपके पास एक liquid की surface है और liquid की surface पे बेशुमार particles होंगे which are trying to escape the surface of the liquid and they need energy, right? तो वो particles क्या करते हैं वो heat energy absorb कर लेते हैं और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो शूट आउट हो जाते हैं इनटू द एयर. हीट एनर्जी प्रोवाइड्स देम इनफ एनर्जी सो दैट दे कैन एस्केप. सो दैट इज basically what I'm trying to say. So B is the right answer. Question 23. A hair dryer is used to blow air across the surface of water in a beaker so that the water evaporates. What increases the rate of evaporation of the water? What increases? First of all, surface area. I'll explain them all after I write them down. Second of all, temperature. Thirdly, low humidity.
एंड फोर्थ, एयर मूवमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया. अगर आपने ये लाइक अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट खुद घर पे ट्राई करना है, यू शुड एक्चुअली, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है मुझ पे, ठीक है ना, तो आपने एक ग्लास का पानी लेना है. ग्लास का, वो क्या कहते हैं, ग्लास लेना है, लाइक कप लेना है. राइट, आपने कप लेना है, उसके अंदर डालना है 1 कप जितना पानी. राइट, 1 कप जितना पानी डालना है उसके अंदर. और आपने एक टब लेना है और उसमें भी 1 कप पानी डालना है. उसमें भी आपने क्या करना है, 1 कप पानी डालना है. एक्चुअली इट वुड बी मच लोअर. आपने डालना है 1 कप पानी. Who do you think will evaporate first? Who do you think is will evaporate first? Most of you will say tub, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है. यू माइट नॉट नो व्हाई, बट फिजिक्स अप्लाई हो रही होती है आपकी डेली लाइफ में. तो टब वाला जो पानी है दैट विल evaporate more. Most of you might not know why, but it is because of the surface area. तो सरफेस एरिया हो गया. टेम्परेचर. जो इवापोरेशन होती है ना, उसके लिए भी एनर्जी जरूरी होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर ट्राइंग टू एस्केप, दे नीड एनर्जी. एंड व्हेन दे आर प्रोवाइडेड विद एनर्जी, they are provided with heat energy, what will happen is that the particles will shoot out into the air. They will escape the liquid. तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो दे विल बी एबल टू गेट दैट thermal energy faster. Low humidity. When there is low humidity, what happens is that there are less, what do you call it, water vapors around, and there is more acceptance of the escaping particles. Air movements. For example, यहाँ से 5-6 मतलब क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, पार्टिकल escape कर रहे हैं, और एक gust of wind आती है. एक gust of wind आएगी और वो सारे particles को अपने साथ ले जाएगी. So that there are more like particles trying to escape now. So yeah, that is the simple phenomenon of evaporation. And इसके जो वो होते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स. अच्छा, decreasing the speed of the air from the hair dryer, no, that will decrease the evaporation. Decreasing the mass of the water, no, that does not affect the, what do you call it, evaporation. Increasing the surface area, so yeah, that does affect the evaporation. Increasing the volume of the water in the beaker, that will not affect either. अच्छा, आगे चलते हैं. 24. The diagram shows ray PQ reflected by mirror X to a parallel mirror Y. The reflected ray around the RS is parallel to PQ. Which statement is correct? The angle between PQ and QR is 45. So they are saying the angle between PQ and QR is equal to 45. They are basically talking about this angle. No, this is clearly 90 degrees. ठीक है ना? So wrong. The angle between QR and RS. QR और RS में भी 90 डिग्री है. So we cannot write 180. The angle of incidence of PQ on mirror X is 60. तो हम इसके बीच में एक नॉर्मल बना लेते हैं. नॉर्मल will always be perpendicular to the surface. ये नॉर्मल बना लिया है. Normal बना लिए तो this becomes 90. When this becomes 90, this will automatically be 45. And this will also be 45. ठीक है ना? Both will be 45. So no, that is incorrect as well. आगे, the angle of incidence of QR on a mirror Y is 45. तो angle of incidence on QR. अच्छा, QR पे भी हम बना देते हैं. और हम अगर हम देखें, दे आर पैरेलल. ये और ये पैरेलल है. Therefore they have the same angle. और ये भी 45 है. Therefore D is the right option. आगे चलते हैं. An object is viewed through a thin converging lens. The diagram shows the path of two rays from top of the object to an eye.
How does the image compare with the object? So basically what they're talking about is a magnifying glass. जो magnifying glass होता है, it is a thin converging lens. और ये जो होता है, it is used to make the image look bigger. Magnification. ठीक है ना? तो yeah, it can be used to make the image look bigger. So yeah, एक तो magnification आ गया. First of all, second of all, it is upright. The image is called upright. और उसके बाद virtual. Virtual और एक और भी आता है, हाँ बस यही है. तो ये हमें कहाँ नजर आ रहा है? लार्जर. लार्जर मीन्स मैग्निफाइड. सो या एंड अपराइट, नॉट इन्वर्टेड इन एनी वेज. तो या आगे चलते हैं. क्वेश्चन 26, वेरी इजी क्वेश्चन. Violet and indigo light have the shortest wavelength in the spectrum of visible light. Which three colors in order of increasing wavelength immediately follow the indigo? तो पहले वायलेट आता है, इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है, ग्रीन आता है, फिर येलो, ऑरेंज, रेड. ब्लू, ग्रीन, येलो. सो बी इज द राइट आंसर. वेरी इजी. ये आप याद कर लें. The order. Question 27. A sound wave passes through a substance. The diagram shows the position of the molecules of the substance at one point in time. Which type of sound wave is wave? Which type of wave is a sound wave and what is X? X is clearly a compression. Compression is a medium of high density, you can say. ठीक है ना? ये कंप्रेशन हो जाएगा. जैसे हमने ये वाला देखा हुआ है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन. सो या इट अकर्स थ्रू आउट. सॉरी. ओके, ये है कंप्रेशन. ओके, टाइप ऑफ वेव. द टाइप ऑफ वेव इज लॉन्गिट्यूडनल. Why, you might ask? Because the propagation, the direction of energy transfer is parallel to the vibration of particles. ठीक है ना? So this is a longitudinal wave, therefore A is the answer. आगे चलते हैं. A man stands between two tall buildings P and Q. He is 50 meters from P and 200 meters from Q. He sounds a horn. He hears the first echo from building P. 1 second later, he hears the first echo from building Q. What is the speed calculated using this formula? तो first of all, आपने यहां से एक बंदे ने हॉर्न बजाया है और वो हॉर्न की जो साउंड है दैट गोज इन ऑल डायरेक्शन. तो पहले यहाँ 50 मीटर्स ट्रैवल किया है. दैट हॉर्न ट्रैवल 50 मीटर्स लेफ्ट, राइट, and then the sound wave travels 50 meters back to the person. इस बंदे ने अभी सुन लिया. एंड इन दिस टाइम ड्यूरेशन एक और वेव निकली हुई थी एंड इट हैज रीच्ड 100 मीटर्स. ये टोटल 100 मीटर्स है एंड दिस विल बी टोटल 100 मीटर्स. अच्छा, इसके 1 सेकंड के बाद, इसके पूरे 1 सेकंड के बाद echo is heard from the building Q. मतलब 1 सेकंड में दिस इज ट्रेवलिंग दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. मतलब 50, आई मीन 100 ये हो गया, 100 मीटर्स ये हो गया और 200 मीटर्स ये हो गया. एंड यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस हमारे पास 300 है, टाइम हमारे पास है 1. दैट विल बी 300 meters per second, which is the answer B. Sorry. 29. What is one of the uses of ultrasound cleaning jewelry? Very simple. 30. A positively charged rod is held near an uncharged metal sphere on an insulating stand. Uncharged metal sphere means that it has the same amount of negative particles as it has the positive particles. Positive particles and the negative particles are of the same value. What is the distribution of charge on the sphere? अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ना. पॉजिटिवली चार्ज रॉड के साथ कौन से वो क्या चार्ज अट्रैक्ट होगा? कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा विद द पॉजिटिवली चार्ज रॉड? इट विल बी नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज रॉड होगा
आई मीन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे अट्रैक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज रॉड्स बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और जो सेम चार्जेस होंगे लाइक द पॉजिटिव चार्जेस दे विल रिपेल। तो पॉजिटिव चार्जेस सारे इधर चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस सारे इधर आ जाएंगे बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। सो सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस भी हो गए। Question number 31. Two metal spheres are mounted on an insulating stand. Sphere X is initially uncharged and sphere Y is positively charged. Sphere X is uncharged and sphere Y is positively charged. What does uncharged means? Uncharged means that it has the same amount of positive particles and the same amount of negative particles. So let's say this has 5 positive and 5 negative. And this is positively charged, Y is positively charged, this has 5 positives and 3 negatives, actually 2 negatives कर लो। तो अगर हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड के बीच में लाएंगे, व्हाट विल हैपन इज दैट द नेगेटिव पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हियर। इसको कैसे लेके जाऊं, ये कर लेते हैं, यहाँ बना देते हैं, फ्रॉम हियर ऑल द वे पासिंग फ्रॉम हियर टू हियर। एक और उठ के चला जाएगा शायद, मर्जी हुई तो एक और चला गया। तो इन दी एंड वी कैन सी बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट पॉजिटिव बिकॉज यहाँ 5 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और 3 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, यहाँ 5 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है एंड 4 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो इन दी एंड बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड। Question number 32. The diagram shows a simple circuit which describes the charge on an electron and the direction of the electron flow through the resistor. Acha, the charge on the electron will always be negative and the direction of the flow of electrons will always be from negative to positive. So from Y to X. So V will be our answer. Very simple question. Acha, 33. Charge of 0.4 coulombs passes through a resistor in 1 second. In 2 seconds, 20 joules of thermal energy is produced in the resistor. What is the potential difference across the resistor? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी। एनर्जी है हमारे पास 20, वी निकालने वाला है, आई हमारे पास निकालने वाला है एंड टी हमारे पास है 2। आई हम कैसे निकालेंगे, आई विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू हमारे पास कितना है 0.4 है, आई हमारे पास कितना है निकालने वाला है, टी हमारे पास कितना है 1 है। दैट मेक्स आई इक्वल्स टू 0.4 एज वेल। तो हम आई की जगह लिख देंगे 0.4। तो 20 से डिवाइड होएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू वी। तो 20 divided by 0.8 will be equal to V, which is equal to 25 volts. That is our answer. I have simplified it to the maximum. So please don't get confused. So that is our answer. Question 34. The diagram shows a simple circuit. Which meter measures the current in the resistor R2? R2 ये है, एमीटर ये है, उसके साथ लगा हो तो B करेगा ना, ऑफ कोर्स। ए तो नहीं करेगा, ना ही सी करेगा, ऑफ कोर्स डी करेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ब्रो। Question 35. When the flash on a camera is used, a charge of 1.5 coulombs flow for 0.003 seconds through a flash lamp. The average voltage across the flash lamp is 36 volts. What is the electrical energy supplied to the lamp? Electrical energy निकालनी है and average power supply निकालनी है। एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक्चुअली एनर्जी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी के लिए हम कर सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी। ठीक है ना।
एनर्जी इज इक्वल टू वी एच फिर से लगा लेते हैं हम लोग। तो हाँ, एनर्जी इज इक्वल टू वी विच इज 3600। आई टी हमारे पास आ जाता है 1.5, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू आई टी, राइट। क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो अगर हम ये लगा लें, 1.5 लगा दें आई टी की जगह, will that be sufficient? Yes, it will. E is equals to 3600 into 1.5. So that is our answer, which is 5400, 5400 joules. तो 5400 जूल्स हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ये आ गया सी एंड डी होगा हमारा आंसर। पावर हम निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी हमारे पास 5400 है, टाइम हमारे पास है 0.003, विच विल बी इक्वल टू 1.8 मिलियन। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले पेपर में भी आया था ये। आगे 36, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच लैम्प लाइट which lamps light when the switch S1 is closed and the switch S2 is open. तो switch S1 is closed now, यहाँ बंद हो गया है। So यहाँ से पास करेगा करंट, यहाँ 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 यहाँ। It is only passing through L1 and L2. It is not going in L3. So only L1 and L2. C will be our answer. Question 37. The diagram shows a hair dryer. Which statement explains why the hair dryer does not need an earth wire? The hair dryer is not in a need of a earth wire because it has double insulation. ठीक है ना, डबल इंसुलेशन मतलब अब इतने प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, राइट। इतना आपके पास प्रोटेक्शन आ जाती है दैट यू डोंट इवन नीड एन अर्थ वायर। सो दैट इज व्हाई डबल इंसुलेशन इज गुड। 38. A left hand can be used to determine the direction of the force when a current carrying conductor is perpendicular to a magnetic field. Which quantities are represented by the direction of the finger P, Q, and R? P will be force, P will be force, Q will be magnetic field, and R will be current. याद कर लें ये जल्दी से, आगे कर लेते हैं हम। आगे हमारे पास आखिरी दो क्वेश्चंस रह गए। Question 39. As a magnet is moved into the coil of a wire as shown, there is a small positive reading on the sensitive ammeter. Which change must increase the size of the reading? Which change must, moving the opposite side into the pole, it will just reverse the, what do you call it, the direction of the EMF. Pulling the magnet out of the coil, pushing the magnet in faster. Yes, that can do like, it can have a change in the magnetic influx. When it has a change in the magnetic flux, it induces a larger EMF due to the Faraday's law. So pushing the magnet in faster will be helpful. आगे चलते हैं। Electrical power is transmitted by cables over long distance at very high voltage. What are the effects of using a high voltage transmission? The loss in the power cables is low. It is lower when the voltage is high, the power loss is lower, and the current is also lower due to the formula P is equals to VI. When the voltage increases, the current will decrease. So both of them are low, low. So D is the right answer. And that is going to be our question number 40. And the paper is done, right? So if you have any questions or queries, make sure to ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, make sure to like. Have a great day. नमाज पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।